Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn German. In today's video we are going to study page number 35 of SSC Standard 8 German textbook. Okay, this is the part A of this page. So ये एक पेज है जिसमें ऊपर जो है वो ग्रामर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. So we are going to do that. यू टाइटल है युबुंग मार्क देन माइस्टर मतलब प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट. दिस इज एक्सरसाइज बेस्ड ऑन आर्टिकल्स. आपको अगर आर्टिकल्स पता नहीं है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख लेना. और दिस इज ऑल्सो फॉर द केसेस नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव केस के लिए. सो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है सो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख लेना बिकॉज दोज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट्स. Okay, so let's begin with our today's video. पहला सेंटेंस है Ich habe ein dash Fuller. What do you have? A pen. So in accusative case. So ein का हो जाएगा einen Fuller. Next, er hat ein dash Uhr. He has a watch. Uhr का आर्टिकल क्या है? Die. Indefinite आर्टिकल क्या है? Eine. In accusative case, it remains eine. So er hat eine Uhr. Next, Inge braucht ein dash Heft. Inge needs a book. Heft ओरिजिनल आर्टिकल क्या है? Das. Indefinite केस में ein. Accusative केस में ein. That's why nothing. Hast du ein dash Bruder? Do you have a brother? Bruder masculine होगा. Article there. Indefinite article ein. Accusative केस में einen. That's why einen Bruder. Next, ich brauche einen Bleistift. Peter braucht ein क्रॉस बुक. इधर कुछ नहीं आएगा बिकॉज बुक ओरिजिनल आर्टिकल das. In indefinite articles it is ein, that is its gender is neutral. Next, Karin hat ein dash Tasche. Karin has a bag. Eine because Tasche feminine. Monika braucht ein dash Kuli. Monika needs a pen. Einen Kuli because masculine in accusative case. Paul hat ein dash Ball. Einen Ball masculine accusative case. Hast du ein dash Auto? Do you have a car? Neutral accusative case. Patrick hat kein dash Freund. Patrick does not have a friend. Keinen Freund. अभी जो काइन या माइन या जाइन दाइन ये चारों वर्ड्स के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल का टेबल फॉलो करना होता है. जैसे आइन का आइनेन हो जाता है, सिमिलरली काइन का काइनेन हो जाता है. ओके. नेक्स्ट, हेनरिश sucht die dash Farbstift. Heinrich searches for the sketch pen. Then Farbstift, masculine accusative. Next, dash Heft habe ich nicht. I don't have the book. Das Heft habe ich nicht. Okay, accusative neutral. Wer hat bitte dash Wörterbuch? Who has the dictionary? Wer hat bitte das Wörterbuch? Next, Karin braucht den Radiergummi und das Lineal. Karin needs the eraser and the ruler. Radiergummi masculine accusative case, lineal neutral accusative case. Okay, so that's it for today. Thank you for watching my today's video. Do like, share and subscribe to my channel.